Welcome, friends. If you can hear me, please give me a thumbs up. Okay, awesome. Thank you, Jagdish, for joining. And thank you, Maswa, for joining. Thank you. We'll have more people joining us, but let's get started to keep the dignity of the people who join on time. Thank you so much. And today is going to be an interesting, very, very interesting topic. And I hope you have your notepads and pen ready in case you want to note down something. So some of us may be knowing what is blockchain. Some of us may be or may not be knowing blockchain. So I have kept this session very easy to understand, although it is very, very technical. And I have kind of mixed it with your finances, like financial stuff. So कौन सा language ठीक रहेगा? Hindi, English, or both mix? Mix ठीक रहेगा? Just type in chat box M if mix. Okay, great. Thank you. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. So, as I said, it's going to be an interesting day today. And so before we start, let's understand what things we are undergoing, right? So since blockchain is related to finances, right? Mostly it is related to finance, and now there are a lot of applications. लेकिन जो हम लोग पहले सोचते थे कि ब्लॉकचेन इट्स ऑल क्रिप्टो करेंसीज, तो थोड़ा सा हम समझेंगे व्हाट आर आवर फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई रिच पीपल आर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर? if you know this, can you type in the chat box? थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव रखेंगे so that it will not be boring. So let me check what are typing now. Do we know what is? Do we know why rich people get rich and poor get poorer? Any idea? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं. So in case you know, then you can type in chat. Okay, thanks Manaswa, you're saying no, wonderful. So the very basic answer is it's about financial literacy. So जो लोग financial literate होते हैं वो गलतियां कम करते हैं और अपने वेल्थ को आगे बढ़ाते जाते हैं, राइट? सो दैट इज द की टू बिकमिंग रिच और बिकमिंग वेल्थियर इज फाइनेंशियल लिटरेसी. एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो. थोड़ा सा और आगे देखते हैं. आई शेयर सम फैक्ट्स बिफोर वी जंप इनटू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ ब्लॉकचेन. सो सिर्फ 27% इंडियन पीपल हैं जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी पता है. ओके, थैंक यू सतीश फॉर ज्वाइनिंग. We just started 2 minutes ago, and I only told about what is literacy. Right? So I'll keep everyone on mute so that we don't get disturbed. तो सिर्फ 27% लोग हैं जिन्हें पता है what is financial literacy. और financial literacy क्या होता है? थोड़ा हम जानेंगे. It is about knowing how you should set your finances, knowing how much you need to save, how much you need to put in insurance, how much you should have about your emergency funds, etc., etc. उसके लिए अलग सेशन होता है, but we are not going to touch that right now, क्योंकि आज का टॉपिक जो है that is about blockchain. So जैसे मैंने कहा, only 8% people उनके पास financial assets है. Financial assets यानी mutual funds or any kind of shares or something else related to finances. Even blockchain, cryptocurrency, that also becomes a financial asset. So that also comes in this, right? So 73% लोगों के पास emergency corpus है. यानी घर में कोई emergency हो गई, so people don't have funds, then they go and borrow from the market at high interest rate. So एक ये बहुत important चीज है. My favorite, Mr. Warren Buffett, I have been following him for last more than 25 years now. वो कहते हैं कि if your money is not earning you, or if you're not earning while you're sleeping, then you will work till continuously till full of your life, and then you have to make your money work, right? If your money is not working for you, then you will keep working for full life. And money, it doesn't get
tired, it doesn't go on vacation, it doesn't sleep. So that is the key message here. तो आइए हम बढ़ते हैं आगे. So if you allow me, may I just introduce myself in 2 to 3 minutes. Just type in the chat box PG. Come on, guys, let us keep this interactive. Otherwise, बहुत boring हो जाएगा ये. Yes, thank you. Thank you, Jagdish. So, by profession, I am a software engineer. उसके पहले I also worked as a electronics engineer, instrumentation engineer. That was a major aspect of my life. Like I have spent around 25 to 30 years in that. Or since 2000, I started following. As I said, I started following so Warren Buffett, and that time I learned a lot of things about mutual funds, about how to create wealth. And it was year 1983 when I cleared my 10th exam. Also, itne अच्छे marks नहीं मिले थे. I just got 59.2%. But when I go and saw in my school, उस वक्त मुझे समझा कि I am in top 10. तो उसकी वजह से मुझे साइंस में एडमिशन मिला. And my dream was to become electronics engineer. When I came, like वहाँ से फिर I came back to Pune. I completed my 12th, but I didn't have sufficient marks in 12th to get admission in Government College of Engineering. So that time I decided to go for BSc Electronics, and somehow it hit me that my father could not afford. So I thought, let me, not this happen to my offspring. So उस वक्त से मेरे दिमाग में था. And then since early 2000s, I started following this. When I came into IT field, मैंने काफी सारे study किया उसमें, and I started investing in multiple instruments, and I started building the wealth. And the journey of my financial independence is captured in this book called 5 Steps to Financial Independence. So I have authored this book. I launched this book in Feb 2023, just few months ago. उसमें मेरी पूरी लाइफ स्टोरी है, काफी सारी चीजें मैंने डाली हैं, बेसिक्स अबाउट फाइनेंसेस. और ये जो आज का टॉपिक है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू फाइनेंसेस. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग सम बैकग्राउंड, राइट? एंड देन आई हैव डन मल्टीपल सर्टिफिकेशंस अबाउट फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स मैंने किया हुआ है. देन आई रिसेंटली कंप्लीटेड ब्लॉकचेन में एक्सपर्ट इन द फाइनेंशियल ब्लॉकचेन. सो लाइकवाइज आई हैव डन मल्टीपल things in my life, and that was my quick story. Thank you for listening to it patiently. आइए बढ़ते हैं आगे. We'll deep dive into the main topic today, that is introduction to blockchain, right? So यहाँ पे क्या होता है? There are multiple aspects of blockchain. You can just see there's a quick overview कि blockchain का पूरा structure कैसा होता है. अभी इसमें अंदर जाएंगे हम लोग धीरे-धीरे, but I'm just giving you a quick overview. So इसमें let's jump into this. ये पूरा जैसे ओवरव्यू दे रहा है, राइट? सो समरी में हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स. सो व्हेनेवर वी आर लाइक, इफ यू सी द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हाट वी डू इन नॉर्मल वर्ल्ड, राइट, बैंक टू बैंक, उसमें क्या होता है? यहाँ से एक बैंक से निकलेगा और दूसरे बैंक पे जाएगा, बस बीच में देयर इज नथिंग. सो दोनों बैंक की अथॉरिटीज होती है जो उसको दे व्हाट डू यू से उसको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, हो गया वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज कॉल्ड P2P. And in the blockchain, what is the difference is whenever a transaction is requested, it goes to a network. And अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप समझ पाएंगे जो बीच में जो पार्ट है, राइट, यहाँ पे. So let me just switch on the spotlight. Okay. Just 1 minute, give me, I want to search that laser lamp, I'm not able to find. Anyways, ठीक है. So what happens is this aspect, right, ये वाला part. So this part, it is verifying. So whenever we are starting a transaction from one place to another place, so it goes to a broad network. यानी multiple, आप ये समझिए कि multiple computers हैं और हर एक के पास वो डेटा है कि कहाँ से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है. तो सब लोगों के पास उसका कॉपी रहता है. And they verify it, right? तो वेरीफाई करते हैं और जब सबका वेरिफिकेशन हो जाता है, then it is goes to a new block. एक नया ब्लॉक फॉर्म होता है और वो ब्लॉक, ये जो ऑलरेडी चेन है वो उस ब्लॉक का, मल्टीपल ब्लॉक्स का,
तो वहां पे वो ऐड हो जाता है एंड इट इज फाइनली एक्सेप्टेड। ये जस्ट एक हाई लेवल ओवरव्यू मैंने दिया है आपको, राइट, बहुत ही हाई लेवल। सो दैट इज हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स। सो लेट मी क्लियर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी वैसे ही है, इट्स सिमिलर थिंग। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। हाउ डू आई रिमूव? क्लियर, क्लियर, ऑलराइट, ओके। So यहाँ पे जो you can see, right? Yeah. So that's what I explained in the first slide. Information is recorded in a block. जो भी transaction है, those are recorded in a block. And once the block is full, it is added to a new the existing database, right? Or that's how the blocks are kept adding. और एक बार वो block उसमें add हो गया, then no one can change that. That's how it is so secure and one of the most secured aspects. That's why it is cloud blockchain, right? आइए आगे बढ़ते हैं. Then let's see what is the next. So let me talk about briefly how the blockchain started. So it started in 1991. The roots are traced back to Stott Haber and Scott Storma, who proposed the concept of cryptography. वो बहुत पुराना, like it was in 1991, almost आज से around 30 years ago. And the major breakthrough came. उसके बाद में then Merkle tree आया, and then theory of cryptographic security आई, ये आया. And 2008 was a major thing when anonymous person, we don't know like whether this person exists or not, Satoshi Nakamoto, उन्होंने एक पेपर लिखा introducing blockchain. एंड दैट वाज द फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी. और उसके बाद ही जो है ब्लॉकचेन ये हुआ. देन वी स्टार्टेड टेकिंग द फुल पेस. फॉर फर्स्ट कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटकॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009, राइट? एंड द सब्सिक्वेंट इयर्स witnessed the release of Bitcoin software, emergence of alternative cryptocurrencies like Litecoin, Namecoin. आज तो बहुत सारे, we have multiple coins existing or cryptocurrencies existing. And now the blockchain, it is also used in multiple aspects, right? In the healthcare, supply chain, insurance, जो भी आप बोलो. So जो भी हम लोग देखेंगे कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है. And in 2014 there was one more thing called Ethereum blockchain form हुआ. In that there was a concept of smart contracts. हम लोग जब कोई घर लेते हैं, राइट, घर लेते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि इसने बोला मैं बेच रहा हूँ, इसने बोला आई एम बाइंग. देन वी गो टू द रजिस्टर ऑफिस और वहां जाके हम लोग सब लोग साइन करते हैं, फिर रजिस्टर होता है उसके सामने साइन करते हैं. सो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट. देन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग सिमिलर व्हिच इज कंप्लीटली ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म. तो उसमें कहीं भी पेपर्स नहीं होता है, दिस ऑल पेपरलेस, राइट? तो ये इस तरह का सिचुएशन हुआ है. एंड देन 2017 में क्रिप्टोकरेंसीज बहुत हाई गया था. द रिकॉर्ड हाई वाज इन 2021 फॉर बिटकॉइन, ऑलमोस्ट $65,000 एक बिटकॉइन. और जब स्टार्ट में लोगों ने लिया सो एक पिज्जा के प्राइस में 5 या 10 बिटकॉइन मिलते थे. सो जस्ट इमेजिन द पीपल हु हैव बॉट द बिटकॉइन दैट टाइम इन 2009. They are now sitting on billions of dollars, right? At least billions for surely. And then उसके बाद में we recently saw the rise of non-fungible tokens, NFTs and metaverse, right? इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. और जैसे मैंने बताया कि 64,000 उसका कॉस्ट हुआ था. So this is a brief background about the Bitcoin or the blockchain, right? So thank you so much. We have more people joining. Shilpa is also joined. Welcome, Shilpa. So हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से. अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, but I wanted to give you an overview. जो भी लोग आए हैं, at least they should understand कि ब्लॉकचेन में पीछे क्या होता है, right? So मेजर चीजें यहाँ पे हैं, like there is a distributed ledger technology, जो सबसे this is called the heart of the blockchain. क्योंकि वो लेजर जो बनता है, हम लोग जब हमारा जो अकाउंट्स होते हैं, right, अकाउंट्स, उसके अंदर लेजर बनता है, यानी जो एंट्रीज होती है ना, एंट्री जो भी हुआ, जो भी आया गया पैसा,
So that is called ledger. So similarly यहाँ पे पूरा distributed ledger होता है, यानी वो ledger क्या होता है, normally जो एक accountant ledger ये रखेगा, so he will only keep it with him, there is only one copy of ledger. लेकिन यहाँ पे पूरा distributed ledger होता है, it is with multiple people, और किसी ने कुछ fraud करने की कोशिश की, so everyone else get an alert. That's why it becomes very very secure, right? So इसको कहते हैं digital ledger. इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे. I have included all these concepts in little bit of details because my thought process is people should understand what is blockchain. लोगों को समझना चाहिए कि blockchain क्या है, and you should not shy away. यानी यही future है. मैं guaranteed बोलता हूँ, सब लोग, everyone is going, even governments are going into blockchain nowadays. अगर आपने देखा होगा, so ICICI बैंक का एक ये आता है, maybe you may get in WhatsApp or SMS that in government has launched a digital rupee. What is that? It is nothing but blockchain, right? So government of India ने भी उनका blockchain release कर लिया. And right now I'm working on one project for Mauritius government. They have a separate क्या बोलेंगे उसको, department of emerging technologies, and they are working on creating using the blockchain in their governance, daily governance, right? So I am working on that, and hopefully I should get that deal very soon. So वहाँ देख ऐसा है, like, you know, so you should not shy away. So my purpose of this session, this webinar, is to educate people on blockchain technology. तो ये काफी तरह है, consensus है, cryptography है, decentralization है, transparency है. These are all the key terms of blockchain. Consensus क्या होता है कि whenever we have एक transaction हुआ ना, तो उसका multiple लोग हो जाता है, हमने जो पहले देखा, और सब लोग approve करेंगे तभी वो approve होगा. So that's called consensus. Cryptography is something, you know, using hash techniques or digital signatures or encryption. उससे क्या होता है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके पीछे एक हैश टैग लग जाता है और वो आगे आगे बढ़ते जाता है, एंड देन दैट बिकम्स मोर सिक्योर. लाइक इसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता. डिसेंट्रलाइजेशन मींस इट इज लाइक, यू नो, so let me, you know, make it more simple. Blockchain is like a book. It's like a book where people have to write down together important things and make sure that no one can cheat, right? And everyone can see that कि किसने क्या लिखा है. They use secret code called cryptography to keep the book safe. It's like writing a secret language that only they can understand. And if someone tries to change the book, it will not be accepted. So the book is divided into multiple blocks. Use a block मैंने लिखा ना block, and it is like a chapter of the book, and where the important stories inside the chapter are mentioned there, and each chapter is linked to the previous chapter. It's like a chain, right? This helps to know if anyone is trying to change the stories. And आप blockchain के बारे में ये सोचिए कि book है, and it is इसमें stories हैं और हर एक story previous story से link की हुई है, right? And each one of the groups, so जो group में जो भी है, they talk to each other and decide on together on whatever is happening in the book and making sure everyone is happy. So they don't need the boss to tell what they should do. So that is called consensus, right? So consensus के बारे में ऐसा होता है. Decentralization क्या है? It's like a big window where everyone can see through, and they can see the all stories and transaction, but don't know exactly who is doing what. It's like a mystery and fun part, right? So उसमें fun भी है, but at the same time mystery भी है, but at the same time it's completely transparent and no one can किसी का tamper नहीं कर सकते. That's important. Immutability is once a story is written in the book, it cannot be changed or erased, right? हमने एक बार story लिख दिया तो उसको कोई मिटा नहीं सकता है, and that's it's like using a permanent markers, right? तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको blockchain basic concept क्या है. I hope you are enjoying or you are liking it. Maybe it may be sometime going heavy, but we'll go ahead. And now अभी जो blockchain मैंने बताया उसके advantage क्या बन जाते हैं? सिक्योरिटी बनती है उसमें, शेयर्ड है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, राइट? तो उसमें क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट मोर इनटू दिस. ब्लॉकचेन मेक्स श्योर दैट द ट्रांजैक्शन आर सुपर सिक्योर. दैट्स व्हाई इट इज, एंड इट यूजेस अ स्पेशल कोड दैट कांट बी क्रैक्ड सो दैट नो वन कैन चीट द ट्रांजैक्शंस. कोई इसमें चीटिंग नहीं कर सकता. दैट्स द, अभी मैं काफी लेमैन टर्म में बता रहा हूँ क्योंकि I have done
the certification, I can talk technical language, but I don't want to use that technical jargon so that you don't get bored. अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि it is साइन होता है digitally और mathematically उसको verify किया जाता है, so that it is not, no one can what do you say, play with it and no one can tamper it. अब shared structure क्या है? It's like a big project where everyone has information and we can see what's happening for the other. But we don't have to rely on any middleman. So it is shared between the multiple entities. और distributed structure क्या होता है? It is not controlled by a central authority. Like अगर आप बैंक देखेंगे, बैंक में क्या होता है? एक मैनेजर है जो पूरा वो देखेगा जाके साइन भरा वाले कि नहीं, ओके साइन है तो उसको ट्रांसफर हो रहा है पैसा. So only one person is there who kind of controls the whole transaction. यहाँ पे क्या होता है? जैसे हमने पहले देखा फर्स्ट टाइम में, ब्लॉकचेन इज वेरीफाइड बाय मल्टीपल नोड्स, है ना. सो भी हम लोग और थोड़ा सा आगे देखेंगे, वो मैंने काफी चीजें इसमें रिपीट की हैं सो दैट यू गेट इट क्लियर. लेजर मैंने बताया, लेजर इज नथिंग बट जैसे मैंने बताया कि अकाउंट, वही खाता बोलते हैं उसको. अकाउंट जब हम लिखते हैं, सो वंस द लेजर इज रिटन इट इज इम्यूटेबल एंड द रिकॉर्ड इज, द एंटायर ट्रांजैक्शन इज अवेलेबल, राइट. तो दैट्स व्हाई आज अगर हम देखेंगे बिटकॉइन का जो डेटा है दैट इज इन टेराबाइट्स, क्योंकि उसमें इतना सारा ट्रांजैक्शन हुआ है कि उसके जो ट्रांजैक्शन हुए उसके मल्टीपल ये होके ना, इट इज इन टेराबाइट्स द डेटा, राइट. सो ये मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताया कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन. एंड इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, मींस नो वन कैन कंट्रोल सिंगली एंड द नेटवर्क, इसका जो नेटवर्क है, so it is controlled by multiple people, right, and it makes highly resilient and no one can attack. अभी हम लोग अगर वेबसाइट देखें, हम लोग सोचते हैं ये वेबसाइट हैक हो गया, वो हो गया, इसकी वेबसाइट डाउन हो गई, किसी ने तो हैक कर लिया. लेकिन यहाँ पे जो हैकिंग है वो बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मल्टीपल जगह होता है, राइट. दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैकेबल और नॉट चेंजेबल. आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क. अभी ये अगेन दिस इज अ बिट टेक्निकल. अभी क्या हो रहा है ना, सो ब्लॉकचेन कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और कंसोर्टियम. थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं. तो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है? इट्स लाइक अ कम्युनिटी वेयर एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, राइट, एनीवन कैन जॉइन दैट पार्टी. और एग्जांपल इज लाइक बिटकॉइन और इथेरियम. बिटकॉइन इथेरियम इट्स अ पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. वहां पे and it works on proof of work. Proof of work है जो काम हुआ है, जो सब लोग जो भी नोड्स हैं वो सब चेक करते हैं and then it is accepted, then that transaction is finalized, right. Private blockchain is something which is used by one organization, like suppose एक बड़ी कंपनी है, maybe IBM, right, or let's say DHL is a company, वो खुद का ब्लॉकचेन बनाएंगे, खुद का ब्लॉकचेन यूज करेंगे. And that is not open to the entire world outside. तो उसमें जो ब्लॉकचेन, उसमें वो ब्लॉकचेन किसको एक्सेप्ट होगा? जो DHL में काम कर रहा है या शायद जो IBM में काम कर रहा है. Only those person can accept. और वहां पे अंदर जो भी उनका ट्रांजैक्शन होता है, बिकॉज DHL में क्या होता है, ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, दैट्स सप्लाई चेन थिंग. तो वहां सब ट्रांजैक्शन है, उसमें इंटरनली सब लोग उसको members can access that, right. Only invited parties can be accepted, and then transactions are private. Only the members can see what's happening. It's used by the companies, as I said. And consortium blockchain में क्या होता है? It's a hybrid, right? So examples of private blockchain is Ethereum Enterprise and Ripple. So यहाँ पे क्या होता है Ethereum Enterprise में? It can be क्या बोलते हैं, it can be deployed for a one given firm, जैसे मेरा DHL. And what is consortium? It's like multiple organizations working together. जैसे देख रहे हैं ना कि इसमें multiple banks हैं, multiple traders हैं. यहाँ पे आपने जो देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड, राइट. So multiple algorithm इसमें consensus होता है, and different organizations work together. It's a kind of semi-private with limited access for the members, and it is used mainly for collaborating between different companies. So I hope you are learning something. So just let me know if you are learning. Type L in the chat box. Let me just see that. Something, you are learning something and you are enjoying it, right? So just type L in the chat box. Awesome.
सुपर, थैंक यू सो मच. सो थोड़ा सा जानते हैं कि डिफरेंस क्या है. पब्लिक जो ब्लॉकचेन इज ओपन टू एवरीवन एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इज एक्सक्लूसिव. कंसोर्टियम इज कंट्रोल्ड बाय द multiple people. It can be controlled by multiple parties. Public blockchain, anyone can participate in transaction. Private में only the people within that, and consortium में restricted access, right? तो ये थोड़े से differences बता दिए मैंने. Now let's move on to the next part. अभी जो लोग थोड़े से IT में है, जिनका IT बैकग्राउंड है, they will understand this a bit, but फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का. सो यहाँ दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट हाउ वी कंपेयर ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, देयर इज अ क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस होता है बैकएंड में, जो क्लाइंट्स अपना डेटा, लाइक हम लोग बैंक में क्या करते हैं, बैंक में अपना मोबाइल ओपन करते हैं एंड वी टाइप द ट्रांजैक्शन कि मुझे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, एंड दैट गोज टू द बैकएंड टू द सर्वर, और सर्वर में उसको वैलिडेट होता है और उसका मास्टर कॉपी डेटाबेस में अपडेट हो जाता है. ये हो गया ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, राइट. इसमें ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड, कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय वन अथॉरिटी, बाय द बैंक. और इसमें कंसिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है. एक बार आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, हो गया, दैट्स फिनिश्ड. एंड देन वी हैव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. उसमें क्या होता है, यू कैन सी इट, राइट. इसमें there are multiple clients and multiple databases. और उसमें क्या होता है, काफी सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और जो भी इंटरेक्शन हो रहा है सबका ट्रांजैक्शन बैकएंड में जा रहा है, राइट. यू कैन सी दिस. तो इसमें डिफरेंस है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में. तो जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं सबके ट्रांजैक्शन सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एंड एवरीवन कैन सी किसने क्या ट्रांजैक्शन किया है. और किसी को अगर उसमें इफ समवन इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, then he creates alert and that transaction is cancelled. Like someone, अभी suppose ये first laptop वाला is trying to forge something, right? उसने कुछ trying to change something forcefully, जो उसको transaction नहीं acceptable है. So that copy will go to all the databases and the other people will see, नहीं ये तो मेरे यहाँ पे नहीं है, so it is invalid. So वो that is then discarded, right? So just to give you some more, what do you say, insights into this. So immutable records, the blockchain keeps the permanent records that can't be changed, and traditional technology can sometimes make mistakes that are hard to track. With blockchain, we can trust the information is accurate and it cannot be altered. And efficiency wise, blockchain automates the process and removes the need for manual work. And traditional technology can be slow. It requires a lot of paperwork. अगर हम लोग बैंक में जाते हैं लोन के लिए, राइट, सो लोन के लिए वो 20-25 दिन और 1 महीना भी लग जाता है. एंड इनोवेशन वाइज ब्लॉकचेन ओपन्स द न्यू पॉसिबिलिटीज एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इन द फ्यूचर. ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, और एडवांसमेंट के लिए इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा. सो दैट इज द क्विक कंपैरिजन बिटवीन ब्लॉकचेन एंड द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी. अब थोड़ा सा हम लोग और भी जरा डीप जाते हैं. अब तक हमने क्या सीखा, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज द डिफरेंस, एंड व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्लॉकचेन, राइट. तो नाउ सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइनिंग इन ब्लॉकचेन. अभी हम लोग जब सुनते हैं, राइट, कि बिटकॉइन माइन कर रहा है, किसी ने माइनिंग का रिग्स लाया है और उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं. सो ही हैज हिज सेटअप, वहां पे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स लगा करके हैं, एंड उनका माइनिंग चलते रहता है. लाइट को बिल उनका 10-11 लाख आता है. सो दिस इज ऑल पावर कंज्यूमिंग. तो जो भी माइनिंग है, तो ये मैं सब बता रहा हूँ कि आपने क्या सुना हो, क्या ना भी सुना हो. तो उसके बैकएंड में क्या होता है, लेट्स सी दिस, राइट. तो मैंने ये जो स्लाइड बनाया है, दिस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ माइनिंग इन द ब्लॉकचेन. सो लेफ्ट साइड में पूरा मैंने बताया कि what is the overall process. Transaction is requested, block is created, and that block is sent to everyone in the node. Multiple nodes होते हैं, and every node validates the transaction, and when it is validated, then the node receives a reward for proof of work, and then that block is added to the existing chain. तो ये transaction complete हो जाता है, right? तभी इसमें से थोड़ा सा और समझते हैं that how is this happening. So digital ledger,
it's like a digital treasure hunt. Mining is like a digital treasure hunt, जहाँ पे हम लोग we try to solve the complex puzzles on using powerful computer. And confirming the transaction means miner play a crucial role in verifying the उसमें हैश की हमने को ढूंढना होता है, तो उसके लिए वो लॉजिक लगाते हैं, दे कीप ऑन फाइंडिंग कि ये नहीं वो नहीं वो, सो दे क्रिएट देयर ओन प्रोग्राम्स, और फाइनली उसको जब उनको हैश की मिल जाता है, देन इट इज वेरीफाइड एंड देन दे मेक श्योर द ट्रांजैक्शन इज वैलिड एंड सिक्योर. कंसेंसस बिल्डिंग क्या होता है? माइनर्स दे वर्क टुगेदर and they work on which transaction should be added to the blockchain. This helps the integrity and trustworthiness in the blockchain network. So when miners are rewarded for their effort with cryptocurrency like maybe Bitcoin, it's like getting prize for successfully solving the problems, right? That's what I said. Mining क्या होता है? आपने वो puzzle solve कर लिया, आपको reward मिल गया और आपने वो अपनी जेब में डाल लिया. Then you can, once the Bitcoin is mined, you can sell it out, right? But जैसे मैंने कहा, it requires a lot of computational power and energy because of the proof of work consensus. Proof of work क्या होता है? जो हमने काम किया उसका proof चाहिए भैया हमको, इसलिए it goes to the multiple nodes, multiple things, and that's why it needs lot of power. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे. अभी नए जो blockchains आए हैं उसमें they have updated this and then they don't need so much of power. उसके बारे में हम लोग देखेंगे, right? And then blockchain security में क्या होता है? It becomes more secure because the consensus mechanism. No one can easily manipulate. तो ये हमने देखा कि how the blockchain mining is done, right? तो ये just a summary हमने अभी जो कुछ अभी तक सीखा, because I'm trying to give you same things so that you know it goes into your mind, and when you go out of this session you will be happy that you knew something about the blockchain, right? So it's a kind of blockchain में क्या क्या होता है? सबसे important part है digital ledger, एक वही खाता, digital वही खाता, इसमें encrypted information होती है, right? It's a trust and security. Blockchain has the trust information because it uses the strong codes and hard to hack or change. Peer-to-peer means there's no middleman. It's like बैंक में क्या होता है? हम लोग पूरी तरह से बैंक के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं, बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, and bank becomes our middleman. और हम लोग और कोई दूसरा कुछ ये करते हैं तो there is a middleman who will do the transaction. Transparency, everyone can see what's happening, making it fair, right? Decentralization क्या होता है? No single person has the authority. It's distributed between, the power is distributed between everyone. And then we have data sharing, right? Data sharing मैंने उसमें the जो भी आपका करेंसी ट्रांसफर होता है, it is shared with everyone. Someone is raising hands, so I'll suggest that you keep your questions till the end. Maybe you can just note it. Thank you, Prasad, for raising your hand. I will let the Q&A after we finish the session. Otherwise, we may get delayed and हमको ये काफी ना टाइम खत्म करना है, right? So ये हमने देखा how the things happen, right? आगे बढ़ते हैं. Let me close this. Now again, this is a same summary, like transaction कैसे होते हैं. हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि ट्रांजैक्शन कैसा होता है, इसको थोड़ा सा मैंने और elaborate किया है, right? So this is a different view. इससे क्या होगा, आपको थोड़ा और समझाएगा कि ट्रांसफर कैसे होता है मनी. हमने पिछली स्लाइड में देखा व्हाट इज ट्रांजैक्शन, माइनिंग कैसे होता है. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रांजैक्शन कैसे होता है. सपोज अभी आपने बिटकॉइन माइनिंग कर लिया, आपको अभी बेचना है किसी और को, एंड यू वांट टू, यू आर पार्टी ए एंड यू वांट टू ट्रांसफर इट टू पार्टी बी, राइट? सो ये ट्रांसफर इनिशिएट होता है, एंड व्हेन समवन वांट्स टू मेक अ ट्रांजैक्शन दे क्रिएट अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ like sending cryptocurrency to or recording the change of ownership, right? हमने घर बेचा है तो change of ownership होता है. Verification is sent to a network of multiple computers, and these nodes work together to make sure that transaction is valid and authentic. Then the next part is, once the transaction is validated, a block is created, and once that is done, it's like that block is added to the existing chain, right?
It's like solving the puzzles. Miners who are specially participating in the blockchain, they compete to solve the this thing, and then they go ahead, right? तो ये हुआ हमने अभी तक पूरा देखा. एंड नाउ जैसे हमने देखा कि वंस द ट्रांजैक्शन इज डन, देन दैट ब्लॉकचेन इज कंप्लीटली एक्सेप्टेड. इसकी यहाँ भी हमने, इफ यू सी वी हैव गिवन इट इन द स्टेप्स. तो द ट्रांसफर होता है, देन दे यूज द डिजिटल ऐप टू ट्रांसफर, एंड इट इज द ऐप इज द स्टैम्प्स उसमें होता है. स्टैम्प्स यानी इट गिव्स द हैश की, and the transaction is stored as a ledger block. This is a technical term, so I don't want to read this out. If you want to go, इसमें हम लोग और technically अंदर जा सकते हैं. So these are the technical aspects of how the transaction happens, right? तो हमने देखा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ about the वो हमने cover नहीं किया. So let me just use that. So the checks instead of balances, ownership is verified by links to the previous transaction. यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो previous transaction की links को वो verify होता है, right? So that's how the and that is called the consensus mechanism. So consensus mechanism के through it is they use the concept called proof of work, where each and every person agrees that which transaction should be added to the ledger. That brings the transparency and secrecy, because it's kind of again solving a complex mathematical puzzle, and which is when it is solved, it is the consensus is agreed that काफी लोग उसको agree करते हैं, then it is added to the blockchain. अभी हम लोग देखते हैं कि how the things, इसमें अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि what are the different versions of blockchain. blockchain 1 में क्या हुआ, blockchain 2 में क्या हुआ, or maybe what is in blockchain 3. So simple way, what is blockchain 1? First let's understand. So blockchain 1 में क्या होता है? It's like a simple ledger. Simple ledger यानी एक वही खाता होता है which is decentralized, right? अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि हम लोग again we are seeing what is traditional system. Traditional system में क्या होता है? The ledger is centralized. एक वही खाता हो गया, जैसे बैंक. अब बैंक में जाओगे एक ही वही खाता है. Even if it is digital, हम लोग बोलते हैं बैंक पूरा डिजिटल हो गया, but even still they have one single ledger which is in digital form. It's a kind of database जहां पे सब कुछ स्टोर होता है. ये सेंट्रल लेजर होगा, राइट? और अगर हम ब्लॉकचेन में देखेंगे, so there are multiple copies of ledger, right? That's called as a distributed ledger. And smart contracts are a digital agreement which execute themselves, right? तो ये उसका हो गया how it is different between traditional system and the ledger system. ये आपने समझ गया होगा शायद. I am trying to explain it in simple terms. वही खाता, या जो हम बोलेंगे नॉर्मल केस में अकाउंट्स मेजर होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वही खाता जो हम लोग देखते थे पुराने पिक्चर्स में. वो मुनीम जी बैठते थे, सब लिखते थे, हाँ ये तुम्हारा ये है हमारा इतना कर्जा बाकी है. सो दैट इज कॉल्ड वही खाता, राइट? अकाउंट. और यहाँ पे सेम चीज, इट इज मल्टीप्लाइड, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग. सबका अपना अपना लेजर होगा और वो कंपेयर करते हैं उसको. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क. एक आदमी ने, किसी ने ट्रांजैक्शन किया तो वो सबके वही खातों में वैलिडेट होता है, और सबने जब सब बोलते हैं कि हाँ वो ये ट्रांजैक्शन वैलिड समझ रहा है, ओनली देन इट इज एडेड टू द लेजर इन द एवरीवनस लेजर. तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा नोड होगा. यहाँ लाखों कंप्यूटर्स हैं, सबके पास में वो पूरा वैलिडेट होता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रूफ ऑफ वर्क. I hope you are getting it, and let's go ahead. So again, how the transaction happens. So तो ये थोड़ा सा और भी उसी चीज का हमने जो देखा था A to B. That is same thing. I have just represented in a different way. कि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को भेजना चाहता है तो it is block is created, it is verified, and then once it is verified, यहाँ पे step number 4 है, the chain is added, and then it is money is moved, right? तो ये same thing I have again trying to explain. और ये थोड़ा सा उसी का expansion है. अभी हम लोग उसका एक
अभी तक मैंने क्या किया, सब थ्योरी बताया, राइट, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था वो। अभी ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये क्या होता है, सपोज एलेक्स वांट्स टू ट्रांसफर सम पेमेंट $500 टू कैटी, राइट। उसको क्या होता है, ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गया, उसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया जाता है। वो जो ट्रांजैक्शन है पूरा, उसमें एंड में ये वो कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया जाता है। एंड देन द इट इज लाइक, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे टाइम स्टैम्प और हैश क्रिएट होता है, एंड दैट ट्रांजैक्शन इज सेंड थ्रू माइनिंग टू द नोड्स। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल नोड्स है, यहाँ मैंने सिर्फ 8-10 दिखाए, बट लाइकवाइज देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स। सबको जाता है वो इंफॉर्मेशन विद दैट सिग्नेचर, और फिर वो दैट कंफर्मेशन इज गेटिंग पुश टू द नेटवर्क, राइट। तो वो सब लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ हमें पता है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसके आगे भी एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो बताएगा आपको कि हाउ इट इज वैलिडेटेड। तो ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ फ्रॉम एलेक्स टू केटी $500 का, और ये जो है दूसरा एक और ट्रांजैक्शन है फ्रॉम गाहक टू एलेक्स। वो क्या करता है, वो चेक करता है कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि प्रीवियसली वो एलेक्स को $300 आया था और उसको $200 आया था, राइट। सो ही हैज $200. सो दीज आर द प्रीवियस लिंक्स एंड दिस इज द करंट ट्रांजैक्शन, राइट। थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ इसमें। अभी ये जो है हमने देखा लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है, राइट साइड वाला। तो वहां पे एलेक्स इज ट्रांसफरिंग मनी ऑफ $500 फ्रॉम हिज अकाउंट, बट दैट थिंग इज वैलिडेटिंग। ये जो ट्रांजैक्शन है ये वैलिडेट कर रहा है पिछले वाले ट्रांजैक्शंस का। सो इसलिए हम कहते हैं ना कि एक ट्रांजैक्शन जो है उसको प्रीवियस लिंक होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। वो जाके वेरीफाई कर रहा है। अगर उसने ये वाला वेरीफाई किया और ये जो ट्रांजैक्शन है सबके पास है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है सब लोग वैलिडेट करेंगे कि हाँ भैया इसके पास पैसे आया था कि नहीं आया था, एलेक्स के पास ये 2 जगह से पैसा आया था, दैट्स व्हाई इट इज वैलिडेटेड कि हाँ भाई इसके पास पैसा है, सो इसी का खुद का पैसा है, देन इट इज वैलिडेटेड बाय। तो ये जो वैलिडेशन है इट इज वैलिडेटेड एट मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो ऐसे उसका वैलिडेशन होता है, राइट। So that's how it is called as a distributed ledger. तो हमने देखा, correct. Now let us understand what is happening in the this thing. क्या बोलेंगे इसको, blockchain 2 में क्या होता है? Blockchain 2 में क्या होता है? There is something called as a self-executing smart contracts. तो वहां पे उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो यहाँ पे नहीं था। ब्लॉकचेन 1 में क्या था, इट वाज सिंपल लेजर दैट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। एक नॉर्मल बही खाता था जो सबके पास था, लेकिन ब्लॉकचेन 2 में क्या आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो भी हम लोग आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है उसका आगे आगे देखते हैं। सो ये थोड़ा सा तो उसका टेक्निकल चीज है, आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू दिस, व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हुआ। So let me just, I am referring to some of the notes which I have made. So इसमें क्या होता है, smart contracts are like the digital agreements which execute themselves, right? And instead of using the papers and talking to the people, हम लोग जाके sign करते थे ना, instead of that, it's a kind of self-executing. The code is stored on a special computer called blockchain, where the conditions in the agreement are met and the code automatically carries out in terms of the contract. तो वो सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाता है। इट मीन्स दैट वी डोंट नीड टू रिलाई ऑन द मिडल मैन। हम लोग जो जाते थे ना कि हम जाके विल गो टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, सो इट्स ए काइंड ऑफ मिडल मैन फॉर अस, और वो हमें वैलिडेट करता है। हाँ उसका एक बार स्टैंप आ गया, वी हैव द स्टैंप फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस, इट मीन्स वो वैलिडेट हो गया। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल यूज बिटवीन द मल्टीपल नोड्स। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, नाउ even governments, right, जैसे मैंने बोला मॉरिशस गवर्नमेंट, so they are trying to implement blockchain so that they completely evade those offices जहाँ पे वो रजिस्ट्रार बैठा होगा, then he will उसकी लाइन लगा के बैठो, हमारा नंबर आएगा तो हम जाएंगे, then अपना जब रजिस्ट्रेशन होगा, so it takes lot of time, right? ये सब फटाफट हो जाता है। अभी यहाँ देखिए, जैसे मैंने बोला अभी आपको, ट्रेडिशनल एग्रीमेंट क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा मैंने दिखाया है। इसमें नाम होता है पार्टी 1, पार्टी ए, पार्टी बी, फिर ये क्या है वो क्या है, डिटेल्स ऑफ द एंटायर क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, फिर ये सब है, फिर यहाँ पे नीचे जाके स्टैम्प सब होते हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें लॉजिक है, प्रॉपर्टीज है एंड लेजर है, राइट। तो ये सब आ गया, एंड दोज
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय होता है ना, इट इज गोइंग टू मल्टीपल नोड्स. अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लेफ्ट साइड वाला, ये सिर्फ एक जगह है, ओनली इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस, जैसे आपको जो भी नियर ऑफिस है वहीं पे होगा. लेकिन वहां जाके किसी ने चेंज कर दिया तो आपकी जमीन गई, जो भी आपने खरीदा है वो सब फोर्जिंग हो सकता है, राइट. दैट्स व्हाई हम सुनते हैं केसेस कि जाके उसने वहां पे कुछ तो झोल कर दिया एंड देन ही चेंज दैट थिंग, और वो पेपर चेंज कर दिया और वो उसके नाम से प्रॉपर्टी निकल गई. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डिप्लॉयड ऑन मल्टीपल नोड्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स. तो अगर किसी को चेंज करना है तो उसको जाके लैक्स ऑफ कंप्यूटर में चेंज करना होता है. बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज सब यानी वो जो है वेरीफाई करते हैं, राइट. जो नोड्स हैं बोलेंगे नहीं ये तो फेक ट्रांजैक्शन है, तो ये they don't accept it. If that's why you can see there are thousands of lakhs of nodes shown here, right? So what is the change between 1 to 2? What is the changes? So ये main changes है, right? So इसमें Bitcoin was based on only the ledger, distributed ledger. That is a blockchain 1 technology. Blockchain 2 में Ethereum आता है, Hyperledger आता है, and not locked into one vendor, right? इसमें पहले ब्लॉकचेन 1 में सिंपल ट्रांजैक्शन होते थे, ब्लॉक 2 में इट इज जेनेरिक कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड ब्लॉकचेन 1 वाज लिमिटेड प्रोग्रामेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी. ब्लॉकचेन 2 ऑफर्स एडवांस प्रोग्रामेबिलिटी एंड इट सपोर्ट्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन. डिसेंट्रलाइज्ड ऐप क्या होता है? अगेन आपने अगर कोई ऐप देखा, राइट, मोबाइल ऐप, तो जैसे हमने कोई आईसीआईसीआई बैंक का ऐप देखा, सो दैट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक. लेकिन डिसेंट्रल ऐप में क्या होता है? दैट ऐप इज अगेन नॉट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और वन अथॉरिटी, इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल पीपल. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइज्ड ऐप. सो दैट इज कमिंग इनटू पिक्चर इन ब्लॉकचेन 2, राइट. ब्लॉकचेन 1 रिलाइज ऑन प्रूफ ऑफ वर्क. जैसे मैंने बोला प्रूफ ऑफ वर्क, उसमें जो भी अपने काम किया उसका प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए यू हैव टू गो टू द मल्टीपल थिंग्स एंड दैट्स व्हाई वी नीड मोर पावर, राइट. ब्लॉकचेन 2, it is introducing like alternative sources like proof of stake and delegated proof of stake, which is more energy efficient. ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, maybe you can go and search that. तो इससे क्या हो रहा है? ब्लॉकचेन 2 में जो लिमिटेशन थे ब्लॉकचेन 1 के अबाउट पावर, interoperability and allowing them to communicate, ये सब निकल गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो दैट इज अ क्विक चेंज बिटवीन ब्लॉकचेन 1 एंड ब्लॉकचेन 2. और ब्लॉकचेन 3 में इसमें भी और काफी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन 2 में भी दोज आर नॉट सो काइंड ऑफ टेकन फॉर, दे आर नॉट इम्प्रूव्ड. सो ब्लॉकचेन 3 में क्या आएगा? इट एम्स टू टैकल द इश्यूज, सम ऑफ इश्यूज लाइक energy intensive proof of mechanism, and then interoperability. For example, the blockchain 1 requires sustainable energy consumption, while blockchain 2, although it is more scalable and with innovation like the smart contract, it still struggles to match the transaction throughout the traditional payment process. तो वहां पे भी थोड़ा सा भी स्ट्रगल है ब्लॉकचेन 2 में भी. सो ब्लॉकचेन 3 में क्या आएगा? It will bring more and more interoperability and develop the solution which are seamless, and it unlocks the potential of directly accessing the asset exchange, and it brings the consensus mechanisms such as proof of stake and proof of sustainability. तो ये अभी ब्लॉकचेन 3 में आएगा, उसका भी इट्स स्टिल इवॉल्विंग. ब्लॉकचेन 3 अभी तक यहाँ पे इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, स्टिल वी आर ऑन ब्लॉकचेन 2 ओनली, राइट. तो ये हो गया, हमने अभी देखा कि व्हाट इज हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. सो ये डिसेंट्रलाइजेशन है. इट इज लाइक देयर इज नो बॉस, देयर इज नो सुपर बॉस, एवरीवन हैव द कॉपी. यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. यहाँ पे बैंक्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल अथॉरिटीज हैं, लाइक हेल्थ केयर में भी यूज होता है, फिर कार में भी आजकल यूज होता है. देन ये अगेन इट इज अ काइंड ऑफ हेल्थ केयर, data, factories, multiple things, multiple people are using these blockchain, and it's all decentralized. अभी एक ही चीज, सपोज एक ही कोई ट्रांजैक्शन है, तो इट कैन बी यूज्ड बाय these multiple parties, right? यहाँ पे हॉस्पिटल है, फैक्ट्रीज है, सो ये कोई जो रहेगा that can be used by multiple people. That's why it is called decentralized, right? So ये हमने देखा, and let's understand what are the application of blockchain.
So we जैसे मैंने बोला finance. So the blockchain can help to us with the money related things, like it can make things easier to transfer. जब हम लोग जो now for example अभी जो अपना हम लोग shares buy और sell करते हैं, so those are all stored in the National Stock Exchange or Bombay Stock Exchange. It's again controlled by one authority, right? So आप सोचिए अगर stock भी अगर ये इस पे आ गए, if it comes on blockchain, तो कितना आसान हो जाएगा, and there can be no tampering. अभी tampering नहीं होता है because it's very secure in the National Stock Exchange, but again it is taking a lot of time, and then still कुछ गड़बड़ हो सकती है. But if it comes to blockchain, again that will be completely tamper free, right? Healthcare में it can help to store our medical records very safe and private. It can also make easier access to share the doctors. जैसे आप ये सिटी में अगले सिटी में आप लोग गए वहां, then you say that मेरा ये कोड है, तो देखो तो doctor can see what is the history, right? That's why you can keep the records. Then retail and manufacturing में it helps to track how the things are made, from where from it come, फिर production में क्या हुआ, फिर dispatch के बाद में क्या हुआ. And for example, if we buy a toy, it can show us when was the raw material, how it is used, and it can help us that whether it has been made ethically and safe or not. तो ये पूरा हिस्ट्री अपने को दिख जाएगा on the blockchain. रियल एस्टेट का मैंने अभी एग्जांपल लिया था. It can make us more secure and easy to buy and sell our houses, so that we can keep our own record कहाँ पे क्या है, and this helps us to know that our property is really protected from the scams. अब ये सब चीजें अभी आएंगी फ्यूचर में. I am just saying that how it can be used, right? Then governance, जैसे मैंने बोला, governance में भी इसका use होगा. Government will use, they will track the registration of vehicles, reduce the frauds and reduce the operational cost. अभी हम लोग अगर देखें तो if we have to use blockchain in real estate, तो अभी जो खर्चा होता है, राइट, जो हमको फीस भरना पड़ता है, लाखों रुपए फीस भरते हैं हम लोग. जैसे हमने 60 लाख का घर लिया, उसमें 2-3 लाख 5 लाख हमने इसमें दे दिया, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन में. So all that cost will go away and it will be done in the minimum cost, and that too everything will be very secure, right? तो ये सब examples हैं. So ये slide next जो है, it is talking about what are the benefits of the blockchain. Let me see what is the time. Yes, we are on time. We still have 10 to 15 minutes, and I hope you guys are enjoying. So now these are the benefits. हमने अभी देख लिया पूरा blockchain क्या होता है, right? So I hope you got some fair idea about what blockchain is and what are the applications. अब ये थोड़ा सा डिटेल में है that what is the benefits. The main benefit is transparency. It provides a permanent tamper-proof record for all the transactions, and efficiency. It is more efficient. It can reduce the need of intermediary, and it helps to reduce the cost. And then we can trust this because it is the most trusted. Security-wise, it is highly secured. ये मैंने भी देखा because since I come from a software background, that too in software testing, so I know how the security testing is done and what are the implications. So यहाँ पे वो chances बहुत कम हो जाते हैं to change the things, the trust बढ़ जाता है. Innovation, it will bring a lot of innovations, right? So because it enables it to create the new business models and applications which were previously not possible, right? तो ये थोड़ा सा हुआ about all the things about benefits of the blockchain technology. So let us go ahead. Now this slide again summarizes हमने अब तक जो भी सीखा, right? So now let's make it more interactive. So can you guys relate now to whatever is whatever is mentioned here? Can you guys relate? Yeah, I can see the question now. What if someone does not approve a transaction while billing there? So unless until, so it is, it is basically if इसमें कैसा होता है कि what I have understood, it cannot be sent to million people क्योंकि उसके लिए फिर बहुत time लग जाएगा. So they choose the nodes from multiple geographies. Like एक transaction अगर यहाँ पे someone is requesting one transaction from A to B, and it is like a P2P computers, और वो जो transaction है, it goes to
multiple thousands of nodes. और सबने जब ट्रांजैक्शन अप्रूव किया, लाइक यहाँ इफ यू हैव इन इंडिया, इट विल बी सेंड टू कर्नाटक, इट विल सेंड टू सम पीपल इन महाराष्ट्र, सम पीपल इन दिल्ली, सम पीपल इन वेस्ट रीजन, सम पीपल इन गुजरात, सम पीपल इन फार ईस्ट, ऐसा ऐसी जगह पे ये पूरा वो भेजा जाएगा फॉर ट्रांजैक्शन वैलिडेशन। और कहीं से भी एक ने भी उसको वैलिडेट नहीं किया, ये रिकॉर्ड नहीं है, देन दैट रिकॉर्ड इज कैंसिल, तो वो नहीं होता वो, because some people are very smart, they still will be able to forge some of the this thing, what do you say, some of the transaction, लेकिन इतना वो कर ही सकते हैं कि they can reach out to anything, right? सपोज उसको लगा कि हाँ मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना मुझे ये सब इनका ये मिल गया है, हैकर्स क्या करते हैं, सब ढूंढते हैं उसके एड्रेसेस, उन्होंने इसे 50 जगह पे चेंज कर दिया, बट 51 and 52 प्लेस ही कुड नॉट फाइंड, और वहां पे वो वेरीफाई नहीं हुआ, then that transaction is not verified and it will not go into the blockchain. I hope that answers the question for Mr. Mrs. Prasad, right? So I answered the question for Prasad, and that is covered here in this transaction. So this is a kind of live example हमने already देखे. So let me just show. हाँ, लाइव एग्जांपल्स। अभी ये जो आप ये देख रहे हैं, राइट, यू कैन सी मल्टीपल, आपके लिए सब नया नहीं है। वीजा यू नो, पोर्शे कार यू नो, वॉलमार्ट यू नो, लेनोवो, ऑल दीज कंपनीज आर नाउ यूजिंग ब्लॉकचेन। जैसे मैंने बोला कि IBM यूज कर रहा है, फिर वीजा कंपनी यूज कर रही है, देर लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, सो दे आर यूजिंग B2B पेमेंट सर्विस के लिए दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल बैंक्स के साथ में वो काम कर रहे हैं, एंड देन पोर्श इज आल्सो यूजिंग IoT बेस्ड थिंग, पोर्शे कंपनी जो है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया, आई डोंट वांट टू रीड दैट, मे बी आई विल जस्ट take a pause, you guys read this and just understand what's happening in the blockchain. Let me have some water. So these are some of the examples of the real life examples, right? So now we have understood. So do you want to know more? And see, now finally kya hota hai? We have understood what is blockchain, but how do we connect it with the financial stability? Okay, apne ko pata hai there are multiple sources of income that you can put your money in banks, in stocks and this and that, right? But when you put your money, is it not good to know what are the this is all high risk, right? मैंने जो भी बताया blockchain, because this technology is still evolving, but whatever I have learned, right, when whatever I have put in this book, so would you like to know more, and would you like to understand more about, slightly more about the finances? If yes, then please type yes in the chat box or type Y in the chat box. Let me see. If you are done with, if you wanted to know, if you have come here, then maybe this thing is over for you. But still, if you want to learn more, if you want to work with me, type in the chat box yes. Let me see. Yes. Okay. Thank you so much. तो ये थोड़ा सा 2-3 slides है, well, where I'll be telling you about basics about the financial stability. So if you set your goals right, you can get the financial directions, you can be motivated, you have the measure of success, and then you prioritize the decision making. So apart from making you know about financial things, about the blockchain and all, I can also help you to understand your financial goals. And in that you can have the 3 type of financial goals, that is short term, intermediate, and long term. These are the 3 goals where you can if you work with me, I can help you to understand these things better. Then secret 2 I can help you is tracking your net worth, about like we have seen what can be your net worth. If we just add blockchain also in you, maybe you're having bitcoins or something. I have multiple licenses. Maybe if time permits, I'll show you how I am generating money each and every day. The money is being generated. I have bought some licenses. If you're interested to know, I'll show you that, right? So if you keep tracking this, and my net worth keep on increasing day by day, I'll show you that.
So when you track the net worth, it brings magic to you. I have seen this magic and my net worth is going high and high. Right. Secret number 3 is creating multiple source of income. वो हमें already काफी लोगों को पता है. Multiple source of income is like salary income, interest income, dividend, capital gains, rental income, and you can add to it blockchain income, right? So these are some of the multiple aspects of incomes, right? So when you have multiple source of income, you can have stability in your life. You can scale faster. You can work from your own confirm, right? So do you want to work with me? If you want yes, then type in the chat box yes. So I have covered the blockchain and very brief I have covered what is all about financial independence. Actually, I have a separate session to talk about that. But right now, if anyone of you want to work with me, because the kind of experience I've gained, I have created another module where I help people to know about financial aspects. I help them setting the goals and I help them creating their net worth sheet, creating the finances, creating how we can plan the finances, right? So if you are interested to work with me, so let me share that with you. Just to give you this thing. Maybe invite you to Raju. Yes, sure. Thank you so much, Prasad. I'll be really happy. My wife Shilpa is there in R&B. I hope you know her. So yes, Shilpa, he knows me. yeah, right. So I'll be really happy to share my this thing. Okay, thank you so much. Wonderful. So I'll be very happy, and now I'm just closing this. So I charge one-to-one setting and goal setting. I charge 1,000 each, but for only for today, it's going to be a special offer if anyone wants to join. So it's a very special offer today, and I will help you to know what are the blockchain, how we can generate money from the blockchain also. So I can set your goals, and today I'm having this offer on a special day today because the Amavasya is starting, and I thought let me do some good karma, and it's only for 399 for those people who want to join me. So you can join me with just 399, and I will change your life. That's guaranteed. So now let me show something interesting. So I will keep this on, and at the same time, let me show you something what I wanted to, how you can earn about money from the blockchain. Okay. So meanwhile, if anyone of you wants to really work with me, you can. I hope you can see the. Let me just check. You can still see that screen, right? Yes, we can see this. Yeah. So you can use it to pay. Meanwhile, I'm bringing that other screen up so that I will show you how I am gaining money from that, right? So I'll take a pause here. If you want to work with me, just pay me rupees 399 and I'll be happy to help you. In the meanwhile, I'm bringing something wonderful. Just hold on. It's a real example, right? Where you can see how the mining is happening and how much I am earning. Okay, so let me stop sharing. So I'll stop sharing this and I'll again reshare my screen. Okay. Just give me a few moments. I'll share this. Now this screen is live. Okay, this screen you can see, right? It is showing something called X node. So it is distributed technology. So distributed enterprise technology, which is so I have these 3 or 4 licenses, and those are working for me, right? So I am using that word, that statement from
Mr. Warren Buffett, that if you are not earning while you're sleeping, then you will end up working your whole life. So see, now you can see these are my multiple licenses. Now let me go to the dashboard. So let me go to rewards. So I have this natural gas. So these are all commodity based cryptos. We have seen that blockchain, right? So now let me just give you a quick background about this. So all these are commodity based cryptos. So क्या होता है, natural gas जो है, that is being extracted in maybe Ghana, somewhere in Ghana. Actually, यहाँ ये actual हो रहा है. And all this natural gas tokens, right? So those tokens are mined every day. So every day maybe $1, $2, कभी-कभी $5 भी हो जाता है. So depending on how the value fluctuates, उसके हिसाब से इसका value वो ये होता है. And this is something for aluminium, right? And this is for beverages. हम लोग जो भी whatever we are beverages we are like Coca-Cola, ये वो जो भी है ना, तो उसमें उन्होंने invest किया हुआ है. And then DCM is data center management. So data rates है, including blockchain. So ये उसका, let's see this, right? So you can see how much is the mining done. 1 minute. So ये mining पूरा live हो रहा है. So you can see that in the last cycle, we have $0.77 mined. Similarly, if you go to NatG, let me show that. वहां तो दिखता है mining, it will change. I'll just show you. So now focus on mined last cycle and focus on current cycle. In few seconds, this will change. Just see that. Right now it is 2615. So in maybe 30, 40, yeah. Now it is 2616. So these tokens are being mined, right? Or if I hold these tokens for a long time, as the market goes up, as the things goes up, so अभी जो ये इसका value $40 है, I'm sure this will go maybe $400, $4,000 or even $40,000 very soon, right? तो इसकी licenses है and total license sold are like 1 lakh licenses are sold. और यहाँ पे market value दिखाता है इसका कितना है per NatG कितना value है वो दिखाता है. And it shows in last 24 hours क्या change हुआ है, right? So let's see what is happening for beverage. ये कहाँ है? So beverage charge और token value it is 0.215 and इसमें last 24 hours में it is increased. So and इसके 1,50,000 license sold हुए हैं, right? So likewise, I have it's all in name of Shilpa only. So and this is all real. I'm not showing something which is fake. Okay, this is actually happening. Live ho chal raha hai sab. And this goes on 24/7. I have bought these multiple licenses. Likewise, I have some licenses in my son's name. So in all, we have 8 to 10 licenses which are generating income for me. Approximately, I get $10 to $15 per day. So is it a bad or good idea? So let's now discuss something. So I think I'll again share the screen. If anyone of you are still interested, I'll keep this screen on. And meanwhile, now let's I'll open it for the Q&A. So we are done almost 1 hour, 10 minutes, and it was supposed to be 90 minutes webinar, but we'll be finishing it in next 4 to 5 days. So let me now open it for Q&A. So let me unmute everyone and you can shoot your questions if you have. You can unmute yourself and you can shoot your questions. So Jagdish, I hope you like this, and would you, share some of your inputs? Would you like to share something? View. Yeah, so thank you very much, Ashish ji. It was really wonderful, and I was actually nothing about blockchain, and Okay. I got a really wonderful idea how it works, how it is the procedure happen. So I got the actually clarity about blockchain, and also you showed how you are making money out of it. So that is really giving too much clarity about that. So I'm Yes. really thankful for your knowledge you're sharing. So thank you very much for that. Yes. Awesome. So now what I'll do, I will share the link. If you really liked it, just go and give me 5 stars.
At least that much you can do. Like the people who want to work with me, that's fine. You don't want to work with me, that's also fine. But please give me the rating on the Trustpilot. I have shared the link, and I will keep the screen for a few more minutes, and then we will make it a closure. So once you are done with the sharing link, sharing the your learning, right? At least you can give that so that I can improve in future sessions. It's a difficult topic, because it's very new. It's all technical, and to explain it in very simple terms, I have taken a lot of efforts. And I hope, as Jagdish ji, you said that you could get a lot of things. At least I am happy that I could make you understand. And Prasad ji, thank you so much for joining in. I'll be very happy to share this in the larger form at RMB. So Prasad ji, if you can also give me your reviews on Trustpilot, and if you can, Thank you, Ashish, for your presentation. I missed the first 15 minutes or so. Okay. Still, you had made it quite simple. So that is the purpose of my visit is to invite you to RMB, and I thought I will meet you first, and if in person or online, and then watch the presentation and then invite you there. Awesome. Thank you so much. We can spend longer time, and there will be a live audience, so you can speak in front of them and they may ask questions, and you can show some of your gains as well as talk about this. Yes, wonderful. It will be really great. And I'm so happy, and I hope you have given me the rating on Trustpilot, so that will be very helpful. And as you said, right, so I'm all in my talk also I mentioned, so through RMB only I got one connect through Shilpa, and I'm working on that project right now with government of Mauritius. So touch wood, if it goes through, I'm aware of that project. Yeah, superb. So we met Mr. Arun Kotowaru is my friend. Yeah, I'm going to get Ashish for one of the RMB meetings. So let me know when is the meeting, and I will get him. Yeah. With or at least he will come, because I'm not sure about me, because from tomorrow itself one of my contract with Jahangir is starting. If it's in the evening, I can make it. Otherwise, Ashish will definitely attend. Yes. Yeah. Chalo, I need to go for another meeting. Catch up with you guys later. Sure. Yes, Thank you so much. Thank you, everyone. We are done with this. So I also have recorded this on YouTube, and I'll share the link with you all. Thank you. Wonderful. It was wonderful talking to you. Thank you so much, and have a wonderful evening and have a wonderful week ahead. Bye bye. Thanks, Jagdish ji. Thanks, Shilpa. Thank you very much. Bye-bye. Thank you so much.